Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Ateequrrahman, VTC teacher. I very welcome you all to this Bmc Vtc online video session. And students, in this today's lesson we are going to learn about chapter number 14, Algebraic Formula, expansion of squares. And in this topic, students, we are going to do today the expansion of a plus b and a minus b. Okay, and we are also doing here the practice set 51. Okay, so let us see here. तो बच्चों, आज के सेशन में हम a जमा b और a माइनस b की तौसी देखेंगे. ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्सपांशन ऑफ a प्लस b और a माइनस b. सो a प्लस b, a minus b is equal to a plus b into a minus b. So यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ब्रैकेट से जो है, तो इस ब्रैकेट को क्या है, यहाँ पर ज़रब है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, a से ज़रब देना होगा. ठीक है, इस ब्रैकेट को, फिर उसके बाद हम b से ज़रब देंगे. ओके, सो a इंटू ब्रैकेट a माइनस b प्लस b इंटू ब्रैकेट a माइनस b. ओके, सो अब यहाँ पर हम इसे ज़रब देंगे और इसे ज़रब देंगे. ओके, तो डैट विल बी a इंटू a विल बी a स्क्वायर माइनस ए बी, और इसके बाद हम इससे अब इसे ज़रब देंगे. ठीक है, तो इट विल बी बी ए माइनस बी इंटू बी विल बी बी स्क्वायर. ओके, so you will see here the step a square minus ab plus ba minus b square. Okay, and that will be a square minus b square. Okay, so you will see here that a plus b or a minus b is equal to a square minus b square. Okay, like this. तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर जो है तो कुछ प्रैक्टिस सेट 51 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. यूज़ द फॉर्मूला टू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. ओके, सो हेयर इज द क्वेश्चन नंबर 1, x plus y, x minus y. So x plus y, x minus y, so x square minus y square. Okay, so that will be x square minus y square. Okay, like this. And here's the second question. You will see here that 3x minus 5 and 3x plus 5. So you will see here that 3x and 3x will be 3x square, and 5 will be 5 square. So you will see here that 3x square means 9x square, or 5 square means 25. So it will be 9x square minus 25, like this. Okay, and now the third question, a plus 6 or a minus 6. So a raised to 2 minus 6 raised to 2. So a raised to 2 means a raised to 2, or minus 6 raised to means 36. Okay, and the fourth question, x minus x upon 5 plus 6, and the second bracket x minus x upon 5 minus 6. So you will see here that x upon 5 raised to 2 minus x raised to 2. So that will be x square upon 25 minus 36.
6. Okay, like this. So you will see here, and the next question, use the formula to find the values. Okay, यहाँ पर हमें देखना है 502 into 498. Okay, so 500 plus 2 into 500 minus 2. So 500 raised to 2 minus 2 raised to 2. So 500 raised to 2 means 25, 2,50,000 minus 4, and that will be 24 lakhs 9,000 99,000. That will be 2,49,996. Okay, so you will see here that the answer will be 500 into 2, 502 into 498 will be 2,49,996. Okay, like this. And the next question, 97 into 103. So you will see here that 100 minus 3 into second bracket 100 plus 3. Okay, so you will see here that 100 raised to 2 minus 3 raised to 2. So 10,000 minus 9, and that will be 9,991. So answer will be 97 into 103 is equal to 9,991. Okay, like this. And the third question, you are observing that 54 into 46. So 50 plus 4 into 50 plus 50 minus 4. Okay, so you will see here that 50 raised to 2 minus 4 raised to 2. So 2500 minus 16. So 2484 will be the answer here. So 54 into 46 is equal to 2484. Okay, this is the answer. And now the fourth one, 98 into 102. So 100 minus 2 into 100 plus 2. So 100 raised to 2 minus 2 raised to 2. So 10,000 minus 4. So that will be 9,996. Okay, so you will get here 98 into 102 is equal to 9,996. Okay, like this. तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने जो आपको एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी और a माइनस बी जो समझाया है ये फार्मूला, और इसी के साथ जो प्रैक्टिस सेट 51 आपको समझाया है ये आपने ज़रूर से समझा होगा। ठीक है, सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की अपने तौर पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। So students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box. So kindly fill that form. तो बच्चों आप
आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।